Welcome back guys to my YouTube चैनल मेडिको एंड टॉम। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ कि हमको पेशेंट को टॉपिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके फैमिली मेम्बर्स को भी ट्रीट करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, ताकि जो स्कैबीज है उसका एक कंप्लीट इरेडिकेशन हो जाए। Topical treatment of the patient and close contacts, including family member, should be done simultaneously to ensure eradication. So second principle of treatment हमारा ये है कि हमको स्कैबिसिडल एंड केराटोलाइटिकेशन यूज़ करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के अंदर। सो इट इंक्लूड स्कैबिसिडल एंड केराटोलाइटिक एजेंट्स इन द ट्रीटमेंट। एंड थर्ड प्रिंसिपल हमारा ये होगा कि हमको जो रिसेंटली वॉर्न क्लॉथ्स रहेंगे पेशेंट्स के उसको वॉश करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसका बेड लाइन भी वॉश करना पड़ेगा। So to avoid reinfection, washing or cleaning of recently worn clothes and bed linen is recommended. Now for the next part, the procedure of treatment. So in the procedure of treatment हम सबसे पहले देखेंगे what are the areas of application. So जो स्कैबिसाइड्स होता है इसको ऑल ओवर द स्किन लगाना होता है बिलो द नेक, जिसके अंदर हमारे पाम, सोल्स एंड अंडर द नेल्स ये सारे पार्ट्स हमको इंक्लूड करना होता है। सो एरिया ऑफ एप्लीकेशंस are scabies are applied thoroughly all over the skin below the neck, including palms, soles and undernails. Now for the next part, the duration of treatment. So जनरली क्या होता है, जो इन्फेस्टेशन होता है स्कैबिस का वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है एक दिन के अंदर ही, लेकिन जो कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि इचिंग और रैश, इसको रिजॉल्व होने के लिए 4 वीक्स तक लग जाते हैं। So the duration of treatment usually effectively treated scabies infestation become non-infectious within a day. However, itching and rash may remain up to 4 weeks. So the next part is repetition of application. So it is repeated after 1 week. Now we will see what are the drugs used in scabies. So drug used in topical therapy include permethrin 5%, linden 1%, benzyl benzoate 25%, malathion 0.5%, crotamidone 10%. And the oral therapy include ivermectin and antihistamine. The antihistamine is used to relieve itching and the hypersensitivity reactions. So that's all about the treatment of scabies. Now you will see the notes in the next slide. I hope the notes is visible. If it is not, you can check it out my Instagram handle. And don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Keep learning.